वो गालिब का शेर है, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। Whenever there is a Vishal Bhardwaj project beyond the adaptations of Shakespeare, I get immediately curious because it usually boasts of a stellar cast and something inventive away from the usual beats of storytelling we are inundated with. The adaptation of the espionage novel Escape to Nowhere, written by Amar Bhushan, Khufiya presents a story of a suspected raw agent Ravi Mohan, played by Ali Fazal, who is presumably sending vital and sensitive information to the CIA. How Krishna Mehra, played by Tabu, has a personal stake in the matter to nab and expose him, and how this in turn has a direct impact on Ravi's personal life, consisting of a son and wife and mother, forms the basic premise of Khufiya. This movie extracted a tricky assessment within me because I was left conflicted, as a lot of its features work in favor for the film but others fall flat. And I think this has to do with the marriage between Vishal Bhardwaj's poetry that often comes at loggerheads with the spy thriller genre. One acknowledges the social commentary that Vishal Bhardwaj wanted to convey, especially with the women in the story, but it often compromises the mission at hand, where one would assume you would be at the edge of your seat, but you find yourself not as invested in this espionage tale that involves countries like India, Bangladesh, and USA. You also do chime in the comments below what worked and did not work for you in this storyline. I think what is effectively done in the film is twofold. The realistic portrayal of agents actually comes as a refreshing change versus the high-octane action films in the form of Pathan and Tiger, because our assumption may be that our agents are kicking ass across continents, but essentially they are found in a mostly Sarkari environment, snooping on individuals for intel. Long stretches of the film showcase the agents looking at CCTV footage for intel, and this precisely is the not-so-glamorous job of agents. What also works wonders for the film is the combination of wicked and twisted humor that is a Vishal Bhardwaj staple when confronted with the most grave circumstances, and this is where an actor like Navnidra Bahl, playing Ali Fazal's mother, absolutely shines, making me laugh the most as she said the most vindictive and god-awful things with a smile on her face. But while you acknowledge these positives, it is these conflicting themes where the film falters to hold your attention or care or root for the characters, as the movie stretches with its running time of being close to 2 hours and 40 minutes long. Beyond the diplomacy and international ties that get compromised in a commentary of identity and what characters keep to themselves versus what is projected, Tabu and her struggle to be a quintessential wife and mother, her inability to tell her son the truth about her reality, Wamiqa and her personality beyond the doting wife and mother that often gets expressed beautifully, by the way, at the comfort of her home alone, and this warped sense of nationalism that Ali Fazal has that puts him in the mess in the first place. The film extends its running time, especially in the second half, becoming a concoction of Mrs. Chatterjee versus Norway and Razi that takes away from the intrigue built up in the first place. The integration of Ram Sampath and a cult is laughable, and while you acknowledge the social commentary of the film, especially the portrayal of women as wives, mothers, and more importantly as individuals, it sometimes just gets lost in the process of not having bearings in a spy thriller, neither being here nor there. This is not to say that the film is a dud, but just that you expect way more from a legend like Vishal Bhardwaj. I was lucky enough to interact with Ali, Wamiqa and Vishal Bhardwaj, and I hope you love this conversation because it is an unfiltered conversation about the film as well. I haven't interacted with actors and creators who have been this honest in a long time. Hello Vishal sir, Hi. Wamiqa, Ali, thank you so much for joining me. So my name's Anmol Jamwal. We have a channel called Tried&Refused Productions. It does movie reviews, interviews and film discussion. I watch all your videos. No, yes. no, you don't. I do. Vishal sir, I wanted to start with you. Yesterday, people were celebrating 9 years of Heather, and they were discussing the social and political themes of that movie and how it's aged and movies today. I wanted to ask you, as a director, with the years that you've worked, when you are discussing about, say, the social fabric of India, political fabric of India, and those are those stories you want to tell, are producers and the people you're pitching to more restrictive or open today versus when you started? Closed today, of course. Yeah, absolutely closed. Okay. Yeah, because it's not easy to
to raise your voice and say what you feel, because we as a country has become very vulnerable right now, oversensitive and overreactive. So of course, yeah, that has trickled down to film industry as well. So someone was saying that now filmmakers have to adapt to being more subversive with their storytelling in order to get their point across, but not be as blatant. Is that something that you have to improvise with, dependent on changing times? Yeah, I mean, you have to be more creative to hide your what you want to say. Yeah. Oh. Wamiqa, I wanted to say it's been lovely to see your journey. I've been an avid supporter, as you know, but you're actively working in different industries, you know, languages across the board. I wanted to know what for you has been the benefit of immersing yourself in different industries and the way they work. एक तो अलग अलग लोगों के साथ काम करने का मौका मिलता है. केरला में जाके जनरली अगर मैं नहीं एक्टर होती तो कहाँ मौका मिलता कि केरला जाके उन लोगों के साथ काम करके उनके कल्चर की स्टोरीज यू नो वहाँ पे वो समझने का मौका मिले, या चेन्नई में या पंजाब में तो चलो पता ही है. बट ये एक बहुत फ़ायदा है. जैसे पंजाब में मुझे लगता है कि कॉमेडी फिल्म्स बहुत मतलब दूसरी बना दो तो कहाँ ही चलेंगी. वहाँ के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो प्रोड्यूसर्स नहीं हैं, मोस्टली प्रॉपर्टी डीलर्स हैं. कैन यू इमेजिन? तो वो अलग ही एक दुनिया लगती है. फिर वही जब मैं मलयालम इंडस्ट्री में काम करती हूँ तो वहाँ पे अलग ही है कि प्रोड्यूसर को भी पूरी स्क्रिप्ट याद होती है, एक एक सीन एक एक चीज़ याद होती है. जब वो सेट पे आते हैं उनको पता है क्या हो रहा है, तो वो इतना कोलैबोरेटिव एक्सपीरियंस होता है. तो आप प्रोड्यूसर को सिर्फ प्रोड्यूसर जो पैसा लगा रहा है वैसे नहीं देख रहे हो, बट यू ऑल्सो सी हिम एज एन आर्टिस्ट हु इज़ ट्राइंग टू मेक समथिंग. अभी तो वो हो गया ना कि हिंदी में बहुत सारा काम कर लिया है तो क्या अब आप सिर्फ हिंदी में काम करेंगे, यू नो वैसा नहीं है. आई स्टिल वांट टू डू फिल्म्स इन तमिल और मलयालम, इवन पंजाबी फॉर दैट मैटर. जब लगे कि अब कुछ कॉमेडी करना तो सिर्फ पंजाबी. No, I think it's only been beneficial for you also, and the kind of things I mean, to see you working with Tyagarajan, मुझे लग रहा था कि ऐसे एक्सपीरियंस कहाँ मिलेंगे. तो I know. पिछले 2-2.5 साल में मैंने जैसे जो प्रोजेक्ट्स किए हैं वो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कैसे हो गया. लाइक त्यागराजन सर के साथ सुपर डीलक्स में भी 3-4 कैरेक्टर्स के लिए उन्होंने मुझे स्क्रीन टेस्ट किया था और तीनों-चारों कैरेक्टर्स के लिए फाइनल भी हो गई थी. लेकिन कुछ ना कुछ हो जाता था क्योंकि उनका काम करने का तरीका ऐसा सर कि कुछ शूट किया फिर शूटिंग बंद हो जाती है, फिर थोड़े टाइम बाद फंड्स और ये सब करके फिर शूट शुरू होता है. बट आई लव इट. एक एपिसोड के लिए मैक्सिमम 10 से 12 दिन बहुत होते हैं. मैंने 35 दिन शूट किया उस फिल्म के लिए, उस एपिसोड के लिए. मेरी मैनेजमेंट सर खुजा रही है कि क्या बना रहे हो. और देन कभी नहीं सोचा था that I'll be working with विशाल सर. इन पे तो आते हैं, इन पे आएंगे. 4 बार काम कर लिया है. मुझे स्पेसिफिकली भी पूछना है आपसे. बट मुझे बताऊं, ये बताना था, आई couldn't leave the opportunity to mention this. What's crazy is, sir, मैंने पहली बार Ali, when I saw him, I was probably in 5th or 6th grade and I was visiting my brother for Founders. Okay. Oh. And I saw you at the Rose Bowl with Karamveer Lamba performing a play. You've seen the play? Yeah. So it's crazy that imagine me, sir, मुझे कोई idea नहीं है कि what the actor's potential is, what his ability might be, but I was nudging my mom कि वो that's the main actor of the play. Can I meet him? Can I meet him? And Ayushman was like, yeah, he's very chill, go. And I told little Anmol is telling me, you're going to be like big, I'm telling you. Oh, and shit, imagine, man. Ali was like, thanks, dude, thanks. I just walked off. So imagine, I wanted to ask you. Hayavadan. Yeah, Hayavadan, yes. हमने किया था, स्कूल प्रोडक्शन था. हाँ जी. तो मैं 11th या 12th में ही था मैं शायद. हाँ. The acting kidas come from that stage, has it? यार वहीं पे हुआ है. वो मेरा सेकंड प्ले था. Oh, उसके wow. my first was शेक्सपियर का एक हमने किया था. वो वहीं से शुरू हुआ है थोड़ा चस्का. बट बॉम्बे आके भी मैं कॉलेज में तो इकोनॉमिक्स में साइंस स्टूडेंट था यार. Oh, wow. तो मुझे पता नहीं था इट बी अ करियर. आई वाज वेरी नाइव. तो स्टेज तक था हॉबी, वहीं तक. फिर जंगें लड़ी हैं मैंने घर पे. आई तो एंडेड अप डूइंग माय मास्टर्स आल्सो. Wow, तो, okay. हाँ. From my perception was that Ali must be doing theatre only in college, but नहीं, it took some time to then. It took time because मेरे second year में सईद अख्तर मिर्जा, he randomly, I don't know where he saw me do what, he picked me, he said यार तुम आओ. तो घंटों हमारी बातें चलती थी.
and it's one of the most beautiful relationships in my life, I can say. आज भी हम बैठ के, he introduced me to Chomsky and so many other things. उनकी पहली फिल्म मैंने की थी, and that film never came out. वो आज भी शायद कहीं FTI में पड़ी है, एक शायद ट्रेलर है उसका, मैंने भी नहीं देखी है, and he directed me there. Wow. वहाँ से थोड़ा सा लगा वाओ, ये कैमरा है, ये ऐसे होता है. Then I think 3 Idiots also then was first, but I did a cameo there. वो भी second year, third year college में. No, there's been no looking back. So well, lovely that this somehow happened. It's destiny has its ways also. Vishal sir, मुझे कहना था इतना beautiful ensemble cast है इस picture का, but for me the standout was Navnidra Bahl. मैं सर सच में I was blown away. जो उन्होंने स्माइल के साथ इतनी विंडिक्टिव चीजें कह रही थी, but I must say sir, casting that, I wanted to know what was your brief to her, because it's such an interesting character and the way she's delivering those dialogues. Yeah. I'm so glad you asked this, because I know Navnidra ji when I did music for Matches. Wow. So in '95, she was playing Tabu's mother, and I had a good relationship with her then. कन्नू तो बहुत ही छोटा होगा तब. So मेरे वो दिमाग में नहीं, जब मैं ये स्क्रिप्ट लिख रहा था, मुझे लिखते हुए नवनीन्द्र जी की इमेज आती थी. तो तब 2016 में मैं जानता भी नहीं था कि वो तब अब कहाँ हैं. पंजाब चली गई थी वापस, चंडीगढ़ में थिएटर करती थी वहाँ से. तो जब इसका टाइम आया इसकी कास्टिंग का, तो ऑब्वियसली उस एज में जो स्टार्स हैं उनको अप्रोच किया गया. आई कांट नेम देम बिकॉज दे आर ऑल्सो फ्रेंड्स, बट उसमें बहुतों का ये है कि डू यू सी अस लाइक दिस, डू यू सी अस लाइक. तो आई सेड बट यू आर नॉट सीइंग द कैरेक्टर एज कैरेक्टर, यू आर सीइंग इट एज यू नो व्हाट इट हैज़ गॉट टू डू विद यू. इट्स अ कैरेक्टर. So, and I was getting very happy, and of course there was a pressure on me to cast a star. कि okay, you know, you need so much money, तो at least आसपास कुछ स्टार तो इकट्ठे करो. How कैसे होगा, you know, typical जो एक होता है. So somehow you know मैंने मैनेज कर के मैंने कहा अच्छा जब अली हो गया तो मैंने बोला देखो अली हो गया ना, हमारा स्टार हो गया. तो अभी मुझे नवनीन्द्र जी को कास्ट करने दो. तो नवनीन्द्र जी को कास्ट किया हमने, एंड आई न्यू कि नवनीन्द्र जी विल किल इट. एंड उनका भी ये था, उन्होंने बड़े इनोसेंटली मुझसे पूछा, तो पंजाबी में पूछा मुझसे, तो पंजाबी में कि मैं तुझे विलेन दिखाई देती हूँ ऐसी. तो मैंने बोला नहीं आप एक्टर हो, आप बहुत बढ़िया करोगी. तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया. रीडिंग में जब हम लोग कर रहे थे, इट वॉज हिलेरियस. एक लाइन बोलती थी, हम लोग हंस के गिर जाते थे. शूट पे भी सर. अरे यार मतलब मैंने कहा मैं कुछ भी हो जाएगा, ये कास्टिंग अब चेंज नहीं करूँगा, क्योंकि कल जो उन्होंने रीडिंग में देख लिया मैंने, एंड आई वॉज प्रूव्ड राइट. ये कोई और कर ही नहीं सकता था ये पार्ट ऐसा, क्योंकि कोई भी करता ना वो उसको ओवर प्ले करता. बिल्कुल सर. क्योंकि ऑलरेडी इतना इनहेरेंट उसके अंदर ह्यूमर और विकेडनेस थी कि अगर उसको उतना सिंपल नहीं प्ले किया जाता ना, एंड इतनी रियलिटी के साथ, शी लुक्स लाइक अ वेरी स्वीट मॉम, ग्रैंड मॉम. द वे शी टेल्स वामिका कि वो बेटा गलती से पिस्तौल का घोड़ा तो गया उधर. I couldn't stop, sir. अली के साथ सिंगल मॉल्ट मैं I could have lost it there. यार no. उनकी तबीयत नहीं सही थी actually. I think she was recovering from COVID. Oh wow. No. इसलिए वो Some of those conversations ना मैं सोच रहा था कि how is the actor not breaking there, but must have. नहीं हंसी छूट जाती थी मेरी. I remember कौन सा सीन था वो, इन दोनों के सीन में तो मतलब शूट करते हुए हंसी छूट रही थी. तेरे सिंगल मॉल्ट. वो बैक एंड फोर्थ चलता चला गया. वो it was turned out the best. It was so entertaining also. Wamiqa, I wanted to ask, you know, what I think the Jubilee practice must have helped also, but when you're dancing on that vintage Hindi music in that apartment, मुझे ये पूछना था आप दोनों के लिए, विशाल सर आपके लिए भी, कि how much of that was choreographed to the T versus he's giving you free rein to just improvise? बताइए आप No, we choreographed it. One of my assistant choreographed it. या वो डांसर था, तो उसको पर ये था कि हमने कुछ ऐसा हैवी नहीं किया था. मैंने उसको बोला था कि एक सिंपल एक, और वहीं पे हम लोग ये शूटिंग से एक दिन पहले हमने होटल के रूम में रिहर्सल की,
एंड वामिका ने अच्छे से पिकअप किया उसे. To the T on beat, I must say. It was a lovely sight. Every time you had an outburst of energy, I was like, which song is going to be now? No, it was great. Ali, this might be a little loaded question, but I would want your insight about it. So, because you're working in the West as well, you work here as well, I wanted to know what's your overview of, say, the writer's strike that's happening over there, and the possible threats that AI has with talent. Could you give me an insight, like a slight overview of what well, exactly? I mean, we've just received good news. It's been called off, but the SAG strike is still on. So a lot of our work will probably take time to resume, maybe in the next few months, hopefully early next year. But it is dangerous. It is. Of course, I'm sure we'll all find ways to adapt, and I'm sure the corporate structures in question would, meet halfway and figure out, because the technical side of our entire film industry, and I think, we should be very aware of it here also, because it's always the trickle effect of what's happening there. It does affect us. हमारा काम चल रहा है, सब खुश हैं, लेकिन घूम फिर के ना, like for instance, our unions, I don't think, are still out there. हमारे एक फिल्म पे कितने लोग काम करते हैं, लेकिन उसका परसेंटेज भी या कुछ भी नहीं मिलता है. So how are we securing their futures? That's very important, and I think that's the big fight वहाँ पे जो हो रही है, which everybody's out there on the streets fighting that fight. Technologies will keep changing. अब जैसे OTT आया था तो अब सिनेमा बंद हो जाएगा, नहीं होगा. But we find the balance, but everybody has to. The moment that the system becomes stronger and we all get very comfortable within it, somebody somewhere says, यार, let's exploit. हमारे जो technicians हैं यहाँ पे, उनके लिए union system, I think it can be bettered. Correct me if I'm wrong. मतलब मुझे लगता है like the SAG system is very good. I till date यार, मुझे Fast and Furious में मैंने एक छोटा सा रोल किया था, मुझे आज भी royalties आती रहती हैं. Randomly एक check आ जाएगा every time it's played. Victoria and Abdul, every time it's played. So I know somewhere that somebody somewhere is looking out. There's a point system, and then so you can have that on your contracts. You can have your legal prepare that, but the legal has to know. तो वो बहुत ज़रूरी है. वो हम उस पर तवज्जो नहीं देते हैं यहाँ पे, but hopefully we are evolving. So that processes can be streamlined for technicians, actors. It needs to be. Otherwise, sure, AI can be the most dangerous thing. जब हमें कुछ पता ही नहीं है, but then slowly you realize it's not just the technology. You can't blame the technology. It was bound to happen, and you use it the right way. No, that's very even in regional industry, like I'll say Punjab में, there's so many, मतलब actors में कई बार ऐसा होता है कि पैसे नहीं मिले हैं. मतलब मेरे साथ ऐसा कितनी बार हुआ है. हमें तो फिर भी ना इतनी लार्ज अमाउंट का, अच्छा कुछ अमाउंट रह गया, जो वहाँ पे टेक्नीशियंस है, मतलब उनके लिए इतना नॉर्मल हो चुका है कि वहाँ का पैसा नहीं मिला, एंड देयर इज नो वन टू फाइट फॉर देम. तो एटलीस्ट फॉर, जैसे मैं अपने स्टाफ के लिए आई लाइक फाइट कि मैं ये नहीं करूँगी अगर इनका पैसा नहीं आया. मतलब वो बहुत ही एक अलग. एंड इसमें बुरा नहीं मानना चाहिए. हमें तो लगता है कि मुझे बुरा कभी लगता है कि व्हाई एम आई फीलिंग बैड फॉर आस्किंग some money for somebody who deserves. Yeah, exactly. तो बहुत बुरा हाल है यहाँ पे. तो वो है, and we should be very aware. So I'm glad you asked that. I think, yeah. Lastly, I thank you again so much for your time, Vishal sir. Is there a Vishal Bhardwaj dream project that has still not come? Is there something that you always thought of but it's not materialized? अरे वो गालिब का शेर है, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले. बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले. तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत फिल्में, मैंने जितनी फिल्में बनाई हैं उतनी ही फिल्में शायद मेरी बंद हुई हैं. और शुरू से लेके मेरी पहली फिल्म होनी थी जिसका नाम था बर्फ़, वही नहीं बनी. सो देन स्लोली आई गॉट यूज्ड टू ऑफ दिस कि ये एक डिज़ाइन है, एक डेस्टिनी का डिज़ाइन है कि जिसमें उस फ्लो में चलते रहना है, क्योंकि उसके अगेंस्ट जाके कोई होता नहीं. क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ कि बहुत जान लड़ा के कोशिश की कि बनानी है, नहीं बनी. और जो फिल्म सोचा नहीं था कि बन जाएगी, वो अपने आप आके बनवा लेती है. ब्लू अम्ब्रेला जैसी फिल्म, हैदर जैसी फिल्म,
मैं कभी सोच नहीं सकता था कि हैदर जैसी फिल्म के लिए, अब सोच सकते हैं क्या कि 9 साल 10 साल पुराना मुड़ के कि कोई इस फिल्म के लिए पैसा देगा? अगले 10-20 साल नहीं सोच सकते कि कोई ऐसी फिल्म के लिए पैसा देगा। या जैसे जिन जगहों में वो शूट की, अब वहाँ पे जाना इम्पॉसिबल है। जहाँ पे हमने हैदर के घर का सेट लगाया था, वजूर गांव करके, वो अनंतनाग से भी अंदर जाके, कोई आधा घंटा अंदर जाके, अब वहाँ पे इम्पॉसिबल है। और हमने वहाँ सेट लगाया, उस सेट को बर्न किया, उसको 2 महीने छोड़ के आए, जब उसमें स्नो पूरी गिर गई हम लोग वापस जाके फिर शूट किया। तो ये किस्मत होती है कि आप फिल्म आपसे आके बनवाती हैं। खुफिया मैंने कितनी कोशिश की कि कोई एक्टर मिल जाए, किसी के साथ बन जाए, नहीं बनी। जब बननी थी वो आके उसने अपने आप आके बनवाया। हम कनाडा शूट करने जा रहे थे इस फिल्म को लेके, हमें 40 लोगों का वीज़ा चाहिए थे, हमें 9 लोगों के वीज़ा मिले, जिसमें कि एक्टर्स इंक्लूडेड। तो हमने कैसे वहाँ शूट हो गया, अपने आप सब शूट हो गया। अगर इसका क्रेडिट हम खुद लें तो गलती है कि कोई है जो होता है, और कभी आप बिल्कुल कितनी भी कोशिश करें नहीं होता है। तो ऐसी बहुत फिल्में हैं। तो कुछ फिल्में फिर आपने ज़बरदस्ती बनाई भी। मटरू इज़ वन ऑफ देम, कि उसके लिए है लास्ट मोमेंट पे जो जिसके साथ मैं कर रहा था, दैट एक्टर बैक्ड आउट बट आई हैड टू डू इट। तो आपको अड़ियल जिद्दी तो बने रहना पड़ता, पर आपके करने से कुछ होता नहीं। बिल्कुल नहीं कुछ है वर्ल्ड में सर जो इंस्पायर करेगा कि हम आपको देखते रहें, ऐसे एक्टर्स को भी देखते रहें। थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द रिलीज। थैंक यू।